Good evening, everyone, ladies and gentlemen, esteemed guests and legal authenticates. I am Hitesh Prajapat, an executive member of Legal Vidya. It is my pleasure to welcome you all to this session on how to do legal research with Legal Vidya. Before we begin, let me introduce Legal Vidya. Founded in 2021, it is more than just a platform, it is a guiding force for law students, offering opportunities through workshop, webinar, internship, and publications. Our goal is to help legal authenticates develop their skill and build a successful career in law. It is an honor to introduce Mr. Paras Chugh, sir, a dedicated legal professional and the Chief Human Resource Officer at Legal Vidya. Paras sir is known for his leadership in legal research and moot court competition. His expertise has earned him the Best Researcher Award from R&D Global University. Please keep your mic on mute and turn off your video during this session. If you have any question, feel free to ask at the end when the speaker invites you to do so. Get ready to explore the world of legal research. We will cover research methodology, legal writing, citation technique, and way to avoid plagiarism. Let's begin this journey together. Over to you, Bharat sir. Hello, I am audible to all of you. Yes, sir, you are audible, sir. Thank you. Thank you, Hitesh, for such a wonderful introduction. Uh, can you can answer the question what is research or what is search? Yes, anyone can answer. Then after that, we can move ahead for the presentation. Or you can answer what is legal research in the chat box, or you can turn on your mic. Research is a process of searching existing information. Okay, very good, Shanmuga Raman. Next is from Himansha. A detailed study on any aspect of law that is meant to contribute. Okay. Researching is deep dive. Okay. Okay. All are good. And just give me a second. Just give me a second. I will turn on my presentation. Give me 2 to 5 minutes. There are some issues. Just give me 2 minutes. The presentation is visible to all of you. Yes. Yes, sir, visible, sir. Okay. So first of all, I am Parastu, a Chief Human Resource Officer, as it has introduced me. Today I will be teach you about the uh, how to do legal research, what are the citations, what are the plagiarism, and all.
So let's move ahead. Firstly, let's go into the basis of the research. Now, research basically it's creation of a new knowledge or existing use of knowledge in a creative way or in a new way to generate new concepts or to generate things better. मेरे को आप लोग बता दो कि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो या हिंदी में कंफर्टेबल हो या बाइलिंगुअल में कंफर्टेबल. English only, sir. ओके ओके. So now, what the legal research does it allows to us? Please answer me. Sure, I will try, Kangna. I will do the bilingual. Please answer what legal research does it allows to us. Does the PPT is changing? Na? PPT की slide change हो रही है? No, sir. No, sir, it No. doesn't change, sir. Just give me a second. Now it is good. Yes, sir. Yes, sir. Okay, अब आप लोग मेरे को बताओ what legal research does it allows to us? Okay, Pallavi. Next one. Any other? No one else? Aditya, Ashu, Azima, Chahat, धनंजय. सी मेरे को ये वन वे सेशन में ही रखना. दोनों तरफ से होगा तो ज्यादा सही रहेगा. आप भी कुछ सीखोगे, मैं भी कुछ सीखूंगा. ओके, जैसे शर्मा, चाहत जैन, नंदनी जैन. ठीक है. So legal research allows you to get more reality about the issue that it is at hand and to anticipate different arguments that may come up before you. लीगल रिसर्च आपको एक मेन इशू होता है जिसको हम अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स से इकट्ठा करके एक जगह पे लेके आते हैं. So these are now I will be talking about the types of the legal research. We are mainly talking about the two types. The first one is doctrinal and another one is non-doctrinal. और ये दो आपके काम लीगल विद्या के रिसर्च मेथड में आएंगे. You will mostly using legal research doctoral method during the internship with legal vidya. It means if you refer to sources of information, like we can talk about articles, commentaries, textbooks, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं. It is a research in which you just need to sit up in one place, gather information, and then come up with your ideas and write it down. But in non-doctoral research, it involves a lot of field work. That is the main difference between the doctrinal and non-doctrinal. Let us move further. The doctrinal research is more concerned with the question of what law.
Yes, Dhananjay, you can take the screenshot, but we will also share the PPT in your group. Now I am explaining about the, I think, I am explaining about the difference of them. So the difference between doctrinal and non-doctrinal. Doctrinal research is more concerned with the question of what क्या क्वेश्चन है हमारा. डॉक्टरनल रिसर्च उस बेसिस पे काम करता है, बट जो नॉन डॉक्टरनल होता है वो कनेक्शन फाइंड करता है सोसाइटी का एंड वेरियस नॉन लीगल एस्पेक्ट्स दैट अफेक्ट आवर लॉ. अब मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा. डॉक्टरनल रिसर्च, आपको एक क्वेश्चन मिला है, व्हाट इज रेप, डिफाइन रेप एंड अंडर इंडियन पिनल कोड, और वी कैन से न्यू लॉ दैट इज भारतीय न्याय संहिता. ओके, सो अब आपको डॉक्टरनल रिसर्च लगाना है. यू हैव द क्वेश्चन, यू हैव द क्वेश्चन एट योर हैंड, है ना. व्हाट यू विल हैव टू डू, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स और टर्न ऑन योर माइक एंड स्पीक. I would like to say you can turn on your mic. Sir, we'll check the case laws and definition of rape under the law. Okay. Imansha needs existing material. Okay, Jashan Sharma, video doctoral research. Sir, also we can go through other case laws related to that case. Okay, very good. Now I will explain you what you will do. So in the doctoral research, you have the question. First, you will see the relevant case laws. Then what was the rape laws before the 1860? Because our question is what is rape under Indian Penal Code. If our question is what is rape under Bharatiya Nyaya Sanhita, so we will check the laws before the 2023. But currently we have the question of the Indian Penal Code. That's why we see the laws before 1860. That is our the historical evolution and what all amendments have been done after independence in that particular section. What is its punishment? Is there a need of more stronger punishment? This all you will do in doctrinal legal research. But in non-doctrinal, फिर से हम एक example से समझेंगे. You take any law that was enacted by the parliament, for example, farm laws. The impact of farm law on farmers, how law is connected with society, yet you see non-doctrinal legal research. Yes, Jashan Sharma is right. Yesterday, late night, we have passed our Waqf Amendment Bill. The mainly amendment act section was section 40. The bill has been passed by the lower house, Lok Sabha, around I think 288 of majority. Now the bill has been gone to the Rajya Sabha. So अभी क्या हो रहा है उस बिल के साथ? कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं. सो अब जैसे तो ये सोसाइटी से कनेक्टेड है, तो ये एक एग्जांपल होता है नॉन डॉक्ट्रिनल का. सबको समझ आ रहा है? एवरीवन गेट द पॉइंट अबाउट डॉक्ट्रिनल, नॉन डॉक्ट्रिनल? Now, these are the types of legal research sources. The first one is primary sources. Constitution, our Constitution of India, or the different countries of Constitution. Yes, Simran, we will share the PPT. Then treaties, जो treaty sign होती हैं. Then statutes, जो laws बने होते हैं. Then regulations, case decisions जो courts देती हैं. Ordinances, जब
ऑर्डिनेंस क्या होता है, चलो बताओ सब. व्हाट इज द ऑर्डिनेंस? Sir, when Parliament is not in session, President makes an order that's called ordinance. So then Very good. Parliament has to also accept that ordinance within, I think, 6 weeks after it comes in session. Yeah, very good, Mr. S. K. Atiful Riaz. That is even right. So the parliament, if parliament अगर सेशन में नहीं होता है, तो फिर जो हमारी प्रेसिडेंट है या फिर गवर्नर, प्रेसिडेंट पूरे कंट्री के लिए, और जो गवर्नर होता है वो स्टेट के लिए ऑर्डर पास कर सकता है उसके रिगार्डिंग, अगर पार्लियामेंट उस टाइम सेशन में ना हो तो. देन जूरी इंस्ट्रक्शंस. पहले को जो जूरी डिसीजंस होते थे वो भी हम साइड कर सकते हैं अगर वो हमारे टॉपिक के लिए रेलेवेंट है तो. देन सेकंड, हमेशा एक बात हमेशा ध्यान रखना, एवरीवन हैव कीप दिस पॉइंट, अगर जितना हो सके आप प्राइमरी सोर्सेज ज्यादा साइड करो, सेकेंडरी और टर्शियरी पे थोड़ा कम जाओ. मीमांसा, जूरी इंस्ट्रक्शंस आर नॉट मच रेलेवेंट, बट अगर हम ऐसे देखें कि जो जूरी ने कहा था वो आज भी उन चीजों को अगर माना जा रहा है तो वो डालते हैं हम अपने उसमें, तो ज्यादा इफेक्ट लाता है हमारे आर्टिकल पे. Now the secondary sources are restatements, dictionaries and encyclopedia, law reviews and journals, treaties, American law reports, and then tertiary sources are law library website, holies. That's it. Now the main steps you have to follow while writing your research article, research paper or blog. This is a very important to note because when you write your internship work, for example, you are given a task, research or write an article on a particular topic. Say, for example, topic again I take is IPC. So when you are given that particular task, you will have the question at your hand. What you need to do? Let me in the chat box or turn on your mic. Make this session interactive little bit. Sir, can you repeat the question? I am saying that I have given you a topic on the IPC. What you will do after that? आप उसके बाद क्या करोगे? अगर हमारी टीम ने आपको एक टॉपिक असाइन किया ऑन आईपीसी, उसके बाद आप क्या करोगे? सर उस टॉपिक से रिलेटेड प्रोविजंस, केस लॉस और टेक्स्ट बुक के थ्रू और भी चीजें जानने की कोशिश करेंगे. ओके, सो यू, आपके पास एक क्वेश्चन आ गया कि हाँ मेरे को इस टॉपिक पे करना है, तो व्हाट डू डू? पहले आप उस क्वेश्चन को समझो अच्छे से कि आखिर वो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि कभी कभी तो क्वेश्चन सिंपल होता है, तब तो आप कुछ ना कुछ करके अपना एक आर्टिकल लिख लेते हो सर्च करके. लेकिन जब क्वेश्चन ही कॉम्प्लेक्स होता है तो आप क्वेश्चन को पढ़ो, 3-4 बार पढ़ो. जब हम मूड कोड में जाते हैं तो मूड प्रॉब्लम को पूरा डिस्कशन होता है प्रॉपर, हम 4-5 बार पढ़ते हैं कि क्या आखिर इंटरप्रेट करते हैं, आखिर वो कहना क्या चाहता है. तो आप पहले अपने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो कि क्या, जब आप उस व्हेन यू अंडरस्टैंड योर पर्टिकुलर क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप हम फॉलो करते हैं अपनी हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स बनाने में. आजकल आर्टिकल में लोग, बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो लोग पॉइंट्स में आर्टिकल लिखते हैं, एआई से आर्टिकल लिखवाते हैं. ये नहीं करना है कभी. इसमें फायदा आपका 2-4 मिनट के लिए आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन आगे फ्यूचर में नुकसान आपका ही होगा. तो पहले अपनी हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स आइडेंटिफाई करो. Now, if you are given a topic on the particular topic, what are the things you expect as a student, as a layman? आप क्या एक्सपेक्ट करोगे इन्हें, एक आर्टिकल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? आप यही चीज एक्सपेक्ट करोगे ना. एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बैकग्राउंड होना चाहिए, रेलिवेंट केस लॉज होने चाहिए, और कोई एक कंक्लूजन होना चाहिए. ये मिनिमल चीजें होती है कि ताकि आप उस एज अ लेमन उस चीज को समझ पाओ. मान लो कि मैं एक लॉ बैकग्राउंड से नहीं हूं, लेकिन मेरे को उसके बारे में जानना है फॉर द नॉलेज. सो एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन अगर उसमें मिलेगी तो मेरे को इजीली रहेगा ना.
अदरवाइज मैं फिर किसी लीगल एडवाइजर या लॉयर पास जाऊंगा, फिर वो भी मेरे से उतनी फीस चार्ज करेगा। लेकिन जब वो चीज अवेलेबल है तो इस हिसाब से लिखें ताकि वो कि सामने वाला कोई स्टूडेंट, कोई लेमैन समझ सके उसको एक प्रॉपर वे में। सो आप यही चीजें, अगर आप चीजें ये एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये भी ध्यान रखो कि आप अपने पेपर में भी वो सारी चीजें लिखें। You have to write all that things which you are expecting from other ones when you are reading some article. So these are some minimal things that you expect in a research paper. सर, Yes, ग्रे ग्रे एरिया क्या होता है? means I did not get your point. सर, व्हेन आई राइट द आर्टिकल, Okay. तो उसमें अगर जितने भी पॉइंट्स आपने कहा कि सब हेडिंग होना चाहिए, कंक्लूजन, केस लो, सब कुछ, पर ग्रे एरिया भी तो एक होता है ना कि आपने जो क्या समझा उसको अपने आप में कंक्लूड करना। कंक्लूजन तो एंड में लिखते हैं ना आप, एंड में। अभी तो उसके अभी हम जब रिवीजन एंड एडिटिंग में आएंगे ना, उस पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। और अभी मैं ओके आगे सर। आ रहा हूँ, उसमें एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। सो अभी हम कहाँ पे थे? हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स पे थे। हाँ, तो आप you will expect when you read the topic, ensure that those things are written in your paper. Then उसके बाद आप क्या करोगे? आप एक अपना फाइनलाइज कर लोगे कि हाँ मुझे एक मेकिंग रफ ड्राफ्ट बना लोगे। आपने एक ड्राफ्ट बना लिया, you have finalized that draft. Then what you will do? You will do revision and editing. Because you can also write a research paper in doctrinal legal research method, cut, copy, paste, and insert some of your own thoughts in the way you like. That is not doctrinal legal. You will write, it is not an article. Because why is it important to complete a rough draft for the date of submission so that you can revise it and edit it? Because many of times what people do, they cut, copy, paste, and when you do this cut, copy, paste, you did not see whether your sentence makes any sense, because you are writing something to explain to people who are around you. So always revise and edit your article as many times as possible, because only then you can write a perfect article. I am not saying there won't be mistakes. After revising and editing, sure, there might be mistakes, but most of the mistakes will be rectified with by you once you start revising and editing it. Just give me a second. I am getting a call. Just give me a second. I am back in 2 minutes. Someone has asked a question between the slide. You will keep your query at your hand. I will answer in the end of the Q&A session. And because we are shortage of time, as half hour is gone and did not complete half of the presentation, just keep your query. I will answer at the end of the session. That is okay? Okay, thank you. So here are some guidelines for writing a research paper. Use a unique style of writing. किसी का भी आपको स्टाइल कॉपी नहीं करना है, अपना एक यूनिक स्टाइल रखो कि हाँ मैं तो इसमें किसी का कॉपी करके लिखोगे तो कॉपीराइट आएगा, प्लेगरिज्म आएगा, उसमें कोई मतलब नहीं। आप खुद का एक अपना यूनिक स्टाइल रखो। हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट्स। जो चीजें आप लिख रहे हो प्रॉपर वे में लिखो कि आप कभी आप आर्टिकल लिखोगे, आप ऐसा लिख दो कि आपको ही समझ ना हो तो बाकी को तो क्या ही समझ आएगा। तो एक प्रॉपर ऐसा आर्टिकल लिखो कि बाकियों को भी अच्छी तरह समझ आ जाए। The writing should be simple, avoid unnecessary jargons. Jargons को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है, उसमें आप अवॉइड, उसमें चिंता मत करो। राइटिंग हमेशा सिंपल रखो। जार्गन्स जो लीगल मैगजीन होते हैं वो सब चीजें होती हैं, समझ में आ गया आप? उसके बाद डेवलप इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट।
जो चीज आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पे लिख रहे हो, पहले उस चीज की पर्टिकुलर आपको स्टडी करनी है. फॉर एग्जाम्पल, आप वी विल अगेन एग्जाम्पल लाइक डिफाइन रेप अंडर आईपीसी. तो आप ऐसे नहीं कि आप चलो ये तो अच्छा टॉपिक है, हमने सुना हुआ, इसके बारे में लिख देते हैं. ये नहीं होता है. पहले उस चीज की प्रॉपर स्टडी करो, उसके बारे में समझो, फिर उसके बारे में आप लिखना चालू करो. उसकी प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए. Then use innovative ideas and ways to justify the research work. Yes. Anything else? Okay. I will continue. आप अपने कुछ इनोवेटिव आइडियाज लगाए जिससे आपका रिसर्च पेपर और अच्छा लगे, ताकि लोगों दूसरे लोगों से डिफरेंट लगे. एक्सप्लेन डिफरेंट साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी एंड प्रोवाइड अ ट्रैक ऑफ बिब्लियोग्राफी. आप जहां भी कहीं से कॉपी करते हो, पेस्ट करते हो, तो उसकी प्रॉपर एक बिब्लियोग्राफी बनती है. वो प्रॉपर, अगर कहीं साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी से लिए तो आपको प्रॉपर ट्रैक रखना है. कभी कभार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 4-5 वेबसाइट से कॉपी कर ली, फिर भूल जाते हैं कि हमने कहाँ से करी है, फिर कुछ गलत डालते हैं, फिर वो रिजेक्ट होता है. इस चीज का हमेशा ध्यान रखना. और हमेशा ध्यान रखना, प्रूफ रीड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द आर्टिकल. अगर प्रूफ रीड नहीं करोगे तो ये प्रॉब्लम आपको ही आएगी आगे जाके. प्रूफ रीड हमेशा करो. एवरीवन गेट इट टिल नाउ दिस प्रेजेंटेशन? Yes, sir. Okay. Now, there are certain things to remember while you are writing your article. First one is the length of the article. Can you let anyone tell me what is the standard length of an article or research paper? It's 1,000 to 1,500 words, I think. More than Sir, 3,000 to 4,000 words. Okay. Everyone has let their know, like someone said 4 to 5, 1,500 to 3,000, 2,000 to 5,000. Now we have, I will we have those people who have written the article only one page as the name of the article. They have written abstract, keywords, everything included done from their side. See, here's my task or research article, but this is not what we want from you. When you are interning with Legal Vidya, I am talking specifically of Legal Vidya. In this particular case, we want to be, your article will be around 2,000 words to 5,000 words. 2,000 words is minimum, because when you write an article, it will be what, 4 to 5 pages. I believe you put, when you see our formatting style, it's line space. Now please listen this carefully about the formatting, as the students are asking. The 1.5 will be the line spacing, a font size will be the 12, and when writing 5 pages is not big deal, I think. And when it comes to writing an article, because we can write even hundreds of pages on the particular topic. People do that. People write dissertation on a round topic, 500 pages. Why always there is so much information available? But we want that information in a short form. So to 2,000 words must be a length of an article. And even when you're going to go side, there are some call for papers, call for chapters, article writing competition, essay writing competition, any kind of writing competition. For the matter of fact, always remember to stay within the word limit. They have given you, if you like, अगर आप उससे वर्ड से ज्यादा आप उसको एक्सटेंड करोगे, अगर आप, तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे. ऑर्गेनाइजर्स कहेंगे कि we will not accept your article because it is not under 3,000 words. It is not fulfilling the criteria. So प्लीज रिमेंबर, आपको जो लेंथ प्रोवाइड करी गई है उसी में लिखें. हाँ, अगर आपका टॉपिक डिमांड कर रहा है कि हाँ इसमें मैं ज्यादा लिख सकता हूँ, मेरा आर्टिकल इससे बेटर होगा, तो आप लिखो. The next one is the language and grammar. It is very important that your language and grammar are accurately placed, because grammatical errors, as a student, if you say I am reading an article and it is not grammatically correct,
there are spelling mistakes. After 2-3 minutes I will not read the article. मेरा तो मन उठ से आएगा ना उससे कि इसको तो लिखना ही नहीं आता, मैं क्यों पढूं इसका आर्टिकल, क्या पता इसने सारे फैक्ट्स ही गलत लिखे हों, क्या पता लॉ ही गलत लिखा हो इसने. I will be like, no, the person does not know what he is writing. How can a person, इतनी सारी कोई बंदा कैसे मिस्टेक कर सकता है? तो हमेशा ये ध्यान रखना कि लैंग्वेज और ग्रामर आपकी हमेशा सही होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी अभी नया वक्फ अमेंडमेंट बिल आया या फिर कोई भी फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरा बिल आया, तो अगर आप उसके ऊपर कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो तो आप पूछोगे ना कि ना नहीं इतना इसके बारे में एक सही चीज लिखी होनी चाहिए. अगर उसकी लैंग्वेज ही अलग है, उसके सारा ग्रामर गलत है, तो आप क्यों उसका आर्टिकल पढ़ोगे? तो हमेशा ध्यान रखना लैंग्वेज एंड ग्रामर को एकदम प्रॉपर तरीके से पढ़ना है. नेक्स्ट वन इज स्कैनेबिलिटी. अगर आप चाहते हैं कि आपका लोग आर्टिकल पढ़े तो आपको पहले स्कैन करना पड़ेगा अपना आर्टिकल. स्कैन मींस प्रूफ रीड. If I open your work at one glance, will I able to understand what this article is talking about? आप एक आर्टिकल में क्या एक्सपेक्ट करते हो? सब टॉपिक्स होने चाहिए. क्या हेडिंग्स मुझे समझ आ जाएंगी? इस आर्टिकल में क्या हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स लिखा है? अगर आप हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स को नॉर्मल में लिख दोगे तो मेरे को तो समझ नहीं आएगा. अगर उस हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स को जो बोल्ड करोगे तो मुझे समझ आएगा ना कि हाँ ये रेलेवेंट है, मेरे को पहले ही दिख जाएगा कि ये चीज इसने बोल्ड कर रखी है, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ ये मेरे को आर्टिकल पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए. Or in the end of this session, I will show you 2 Word files. Then you can do that scannability at your own pace. Now, explaining jargons. In the previous slide, I have explained, I have let you know about the jargon. Jargons क्या होता है सब बताओ फटाफट चैट बॉक्स में. अननेसेसरी थिंग्स को अवॉइड करना. जार्गन्स का मतलब ये होता है एज अ लॉ स्टूडेंट और रिसर्चर. हाँ जी. We need to explain what is the meaning of the word. Difficulty words, some difficulty words are there, no sir. So for that purpose, we need to explain what the uh, meaning of that expression. I think sir, jargon means. ओके सो मेरी जार्गन का मतलब ये होता है स्टूडेंट. Many times what we do, we try to incorporate as many legal maxims and many legal jargons as possible. If you do that, these terms, for example, you have used the term order pattern. Everyone, Sorry sir, but your voice. Sorry sir, but your voice is not coming. Sir, your voice is breaking, sir. I am audible now. Hello. Yes, Yes, sir. sir. Now you are audible, sir. Yes. Okay, sorry for the inconvenience caused to everyone. I am apologize for that. Now, I am asking what is the meaning of odi ultram partem? I am audible? Let the other side be here. Great. See, some Sir, we need to hear the opponent words also, sir. yeah, very good. Gitanjali, very good, Vivek. See, some students does not know what odi ultram partem as a different stream To from hear the student. other side. Yeah, great, Madhu. So, जब अगर कोई और स्ट्रीम का स्टूडेंट अगर वो आर्टिकल पढ़ेगा तो उसको नहीं पता होगा ऑडियो अल्टरम पार्टम क्या, अगर हम उसका प्रॉपर मीनिंग नहीं लिखेंगे. So without explaining them again, it won't be any use to the person who is reading. Why we read an article, why we search for anything online, कि हम एक properly उस टॉपिक को समझ पाए in a simple way. So if you are using the legal terms or legal maxims, explain them. Always write a good introduction and conclusion. हमेशा याद रखना इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपका अच्छा होना चाहिए. इंट्रोडक्शन में आप बताते हो कि आपको क्या
आप टॉपिक के बारे में थोड़ा इंट्रो देते हो शुरुआत में, उसके बारे में बताते हो कि आखिर हमारा टॉपिक है क्या। एब्स्ट्रैक्ट में तो आप लिखते हो कि हम बताना क्या चाह रहे हैं नीचे आर्टिकल में, लेकिन इंट्रोडक्शन में हम लिखते हैं कि हाँ कि हमारा टॉपिक किस चीज पे बात करता है। एब्स्ट्रैक्ट आप एक लिमिटेड वर्ड में लिखते हो, लेकिन इंट्रोडक्शन को आप लाइक 700 से लेकर के 2000 वर्ड्स में भी लेके जा सकते हो, ये आपकी साइड पे होता है। तो हमेशा ध्यान रखना इंट्रोडक्शन मेन होता है आपका, एक तरीके से क्रक्स होता है आपके आर्टिकल का। नाउ कंक्लूजन, समवन इज आस्क्ड द ग्रे एरिया। सो कंक्लूजन में आप अपना वो ग्रे एरिया डाल सकते हैं, कंक्लूजन में अपने पॉइंट्स ही डालते हैं। कंक्लूजन में ये कहा जाता है कि अगर आप अपने जो भी आपने कंक्लूड करा, जो भी आपने फाइंडिंग्स करी, कि आपको इतनी रिसर्च करने के बाद क्या पता लगा, वो कंक्लूजन होता है। और उसके अंदर आप अपने ग्रे एरिया में चीजें डाल सकते हो कि क्या आपको सही चीज लगे, क्या आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट्स लगे, क्या आपको नेगेटिव इम्पैक्ट्स लगे। हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं कि फाइंडिंग्स का एक अलग से हेड बनाते हैं, फिर देन कंक्लूजन लिखते हैं। यस, एनीबॉडी आस्किंग एनी क्वेश्चन? I'm sorry, sir, by mistake. नो वरीज। Okay, now we are Madhu, you have understand your query? Yes. Okay. Now ask for reviews. आप हमेशा अपने peers, अपने classmates, because when they review the article, they see an article, they will say, okay, this thing is particularly missing, this is explanatory thing is missing in this article, you incorporate this. हमेशा अपने seniors, classmates, faculties से हमेशा हेल्प लो कि बताओ इसमें क्या कमी है, that this explanatory you have Sir, that in again your your article. voice is breaking. So yeah, it's Just a second. I am saying now I am audible. Yes, sir. Hello. Now I am audible. Yes, sir. yes, sir. Okay. So I am saying that I am at the ask for reviews. Whenever you have ask your reviews from your peers, because when they review the article, when they see an article, they will say, okay, this thing is missing in this. You have to this explanatory thing is missing in this. You have to incorporate this. Then you can incorporate it if it is relevant to you. हाँ ठीक है, आपको अपने पीयर से रिव्यू लेना चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ कि नहीं मैंने ये चीज लिखी है, तो आप उसमें मत लिखो। लेकिन जो आपके पीयर्स आपको कह रहे हैं कि लग रहा है फिर आपको कि हाँ ये चीज तो मैं रह गया लिखना, तो ये आपको हमेशा लिखना है। सो ऑलवेज डू दैट एज वेल। सबको यहाँ तक समझ आ गया जितना अभी तक हमने पढ़ा है? Yes, sir. ठीक है। Now the format. While you are writing the article during the internship period, always see in the research article abstract is required, or we can say compulsory. But in this internship you are writing a blog, so it is not compulsory to write an abstract. But if you write the abstract, तो आपका आर्टिकल को ब्लॉग को ज्यादा अच्छा करेगा, जो पर्सन पढ़ेगा उसको ज्यादा समझ आएगा। तो आप अगर एब्स्ट्रैक्ट लिखोगे तो आपके पब्लिकेशन होने के चांस ज्यादा है। So now during the internship period, to write your abstract, then keywords, introduction, obviously, it have the main body, then the use of authorities and conclusion. So जो abstract and keywords आते हैं उसमें first मेरे को अब difference बताओ सब abstract और introduction में क्या क्या difference होता है? So actually, abstract is the crux of the research paper. Whatever we have written in the research paper, we write it in a smaller form, in few words, that whatever it is in it, and after abstract we write keywords. What are the keywords which we have written in the research paper? Okay. So the basic difference between that is the purpose of the both. Abstract gives you an overview what you have discussed throughout your article, and introduction introduces the topic
एब्स्ट्रैक्ट को आप मैक्सिमम 300 वर्ड तक लेके जा सकते हो, बट इंट्रोडक्शन इज मच बिगर एंड बिगर। आपकी थिंकिंग जहां तक है, आप वहां तक उसको इंट्रोडक्शन को लेके जा सकते हो। अगर आपको बड़ा इंट्रोडक्शन लिखना है, आपके ऊपर है। आपको छोटा इंट्रोडक्शन लिखना है, आपके ऊपर है। If you want make points and sub points, you can write a shorter one as well as depending on your preference. Always use authorities because it shows that the information that you are using is relevant and is correct. In fact, it gives basically explains the reader that okay, if this person has written that in India there have been X number of crimes over the previous year, this is the source of that particular information and it is a verified information. So always do that as well. Then conclusion. हमेशा कहीं से भी कोई भी डाटा लिया, केस लो लिया, उसको हमेशा साइट करना। Now conclusion, what you have learned throughout your research paper, you have understood about the topic, you will conclude that particular topic in your own terms, write a conclusion or solution for the same. Now coming to something really important, plagiarism and citations. First we will talk about plagiarism. आप लोग, मैं एक वेबसाइट का टूल डाल रहा हूँ जिसमें आप प्लेजरिज्म चेक कर सकते हो। इतनी देर आप बताओ कि प्लेजरिज्म कितना रिक्वायर्ड है हमारी इंटर्नशिप में, जो मैंने पिछले सेशन में बताया था। सर 10%। सर 10%। या सो प्लेजरिज्म बेसिकली, मैंने अभी एक वेबसाइट डलवाई है मेरी टीम से, आप इस पे ये फ्री प्लेजरिज्म चेकर है टिल 1000 वर्ड्स। सो आप अगर आपका आर्टिकल 3000 वर्ड्स का है तो आपको 3 बार रिपोर्ट कैलकुलेट करनी है, फिर देन उसको कंपाइल करना है, फिर सबमिट करना है जो गूगल फॉर्म आपको प्रोवाइड किया गया। अगर आपके पास कोई पेड सॉफ्टवेयर है देन आप उससे कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास पेड सॉफ्टवेयर नहीं है, सो दिस वन इज अवेलेबल फॉर यू, यू कैन डू दैट इन दैट ऑल्सो। Also, there is one more that is plagiarismchecker.net. You can do that also. Now, the plagiarism is means like when you copy someone else's work without giving them proper credit. Why? You must not do it because it is very unethical. It is a wrong practice, and many times you can even be punished for the plagiarized content. Now, if you remember, I don't know how many of you are present in the previous session, in the introductory session. I stated for research, no plagiarism 10% will be allowed. So always remember, since you are our new interns, and we also want you to learn something and not just stuck upon what I did say, someone else work. So always ensure that whenever you are submitting your research paper or writing a work for someone else, or you are doing your internship tasks, like you're with us, not to plagiarize. Yes, if you are referring to someone else's work, give them proper credit, but do not intentionally plagiarize because it is an academic offense. Say in the end, always use quotation marks and references. If you are directly quoting someone else words or using someone else's thoughts and your ideas, please quote them. Use proper quotation marks. Like you can see, if you are saying that Mahatma Gandhi said X statement, quote that statement. Put them in double inverted commas. Always paraphrase only when it is necessary. Now, many people, what they do? They do, चलो भाई paraphrase कर लेते हैं हम, फिर अपना आर्टिकल सबमिट कर देंगे। I know sometimes it can be useful, but not every time. अगर आप पैराफ्रेज करते हो तो साइटेशन तो दो भैया। अगर आप साइटेशन नहीं दोगे, इंक्लूड रेफरेंसेस, बिकॉज अगेन यू आर यूजिंग समवन एल्स वर्क, इन द एंड ये आपका नहीं है। सो प्लीज, even if you are paraphrasing, use proper citations, then cite references. When using facts, as I said, okay, if I have written my article that there have been so number of crime in India, now this is fact, इतना crime हुआ, कुछ तो source होगा भाई जहां से मुझे ये बात पता चली है। Always cite the source. So any factual information that is not of a common knowledge should be properly cited to the substantiate your claims. और जो आपका सोर्स है उसको प्रॉपर क्रेडिट मिले। फिर से एक एग्जांपल से समझेंगे हम। एनसीआरबी का डाटा, मैं एनसीआरबी का डाटा साइट करूंगा,
इस साल का ये डाटा है, whether it is from first one to the second one. Now this is someone you, that is something important. अगर आप नॉन नेटिव स्पीकर हो, कॉपी फ्रेजेस विद स्पेशल क्वेश्चन. अगर आप नॉन नेटिव स्पीकर हो तो इंग्लिश आपकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो अनइंटेंशनल प्लेजरिज्म को अवॉइड करो और दूसरों को क्रेडिट दो उनके आइडियाज के लिए. अवॉइड करो एआई टूल्स को. आई वांट यू ऑल टू, अब बहुत इस बात को हम ध्यान रखो. चैट जीपीटी तो आ गया है, चैट जीपीटी से लिख कर दे देता हूँ या दे देती हूँ. So people do that, they just open the particular app, please write an essay on this topic or an article on this on particular, gives you that article, but what happens, it does not give you the correct article. वो अपना आइडिया नहीं जनरेट करके दे रहा, उसके पास जो 4-5 वेबसाइट है गूगल पे, उसमें से कुछ निकाल के आपको दे देगा. उसका क्या मतलब है? उसका कोई मतलब नहीं है. ये आपका नहीं है, किस आपका आइडिया नहीं है. वो सिर्फ कंटेंट जनरेट करके दे सकता है. वो आपको जो उसके प्लेटफॉर्म के सोर्सेज में जो वेबसाइट्स होंगे उसमें से वो आपको आर्टिकल जनरेट कर रहा है. आपका काम, योर वर्क इज डन इन 15 to 20 seconds, no doubt, but what happens, AI will not give you the correct citations, and if it is anything that is someone else's work, if it has been copied from there, then again it will come in plagiarism. In the very end, we do not want it. So what you can do to avoid plagiarism is first create an outline what you want to write. फिर अपने आइडिया को इनकॉर्पोरेट करो. वही पुराना प्रोसेस गूगल करो, बुक्स पढ़ो, केस कमेंट्रीज पढ़ो, जर्नल्स में जाओ, एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड मिलेंगे. अभी भी नहीं मिला, गूगल से कॉपी पेस्ट करके सबमिट कर देंगे. ये थोड़ी होता है लास्ट दिन आपको याद आया, अरे भाई आज तो सबमिशन डेट है, सबमिट करना है, गूगल करेंगे, वहां से कॉपी पेस्ट कर देंगे, भेज दिया. ऐसे मत करो. फर्स्ट राइट योर ओन थॉट्स एंड आइडियाज, देन बिल्ड अपॉन दैट. अब वो कैसे करना है? देन यू गो टू गूगल, go to various websites, textbooks, journals, commentaries that are available, then go there. Just do not straight away jump to this, because when you straight away jump to the unintentionally plagiarized कर ही दोगे, फिर ओरिजिनल रह जाएगा 10% and plagiarized content will be 90%. So what you do? First, writing by yourself. Develop your article, and then if you think we need some extra research in this, then add that research from Google on various resources. Everyone get about the plagiarism. कितना इंपॉर्टेंट होता है प्लेजरिज्म एक आर्टिकल में. ऑल्सो आपको पता होना चाहिए इसका कॉपीराइट क्लेम भी बहुत ज्यादा होता है, कंपनसेशन आपको बहुत ज्यादा लगता है. नाउ ठीक है. सो इन द लास्ट आई विल टॉक अबाउट साइटेशन. कितना जरूरी है साइटेशन? टू शो योर रीड. अगर आपने प्रॉपर अपनी रिसर्च करी हुई है तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा. प्लेगिज्म बोला कि अगर प्लैग हो तो साइट करो, यू शुड प्रॉपर्ली साइट फैक्ट्स एंड स्टफ. So let's see why citation is important. Firstly, it is to show your reader that you have done proper research by listing sources. You used to get your information, that to be a responsible scholar. With example, अब फिर से हम एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है. 3 बच्चे थे, ए बी सी, तीनों को प्रोजेक्ट मिले. ग्रुप प्रोजेक्ट था, तो तीन जनों ने, 2 जने मिलकर काम कर रहे थे, एक जने ने कुछ नहीं किया. लेकिन जब सबमिशन का टाइम आया तो सी भी आ गया अपना क्रेडिट लेने. तो होता क्या है, आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? ए और बी को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा कि हाँ ये इसने तो कोई काम करा नहीं, क्रेडिट लेने फिर भी आ गया. स्टिल ही इज कमिंग एंड टेकिंग क्रेडिट फॉर माय वर्क इन द वेरी एंड.
कि इसने तो कुछ करा भी नहीं, क्रेडिट इसको भी मिल रहा है, दैट इज समथिंग वेरी रॉन्ग। अब सिमिलरली हम रिसर्च आर्टिकल की बात करते हैं कि अगर किसी ने अपना टाइम एनर्जी लगाकर रिसर्च पेपर लिखा है, रिसर्च आर्टिकल लिखा है, इवन विदाउट गिविंग हिम प्रॉपर क्रेडिट, विदाउट एक्नॉलेजिंग हिज आइडियाज, यूज इट इन योर वर्क, firstly that is very unethical of view and very incorrect. So yes, to be a responsible scholar, by giving credit, this is also why we use proper citations and references, obviously to avoid plagiarism by quoting words and ideas of other authors, and to allow your reader to track down the source you used by citing them accurately. What all you must cite? This is very important. You must cite all the facts, figures, ideas, information that is not of a common knowledge. Then any idea, words, or theories, or any exact language that you have used of any other author, then any publication. In publications, you use something from books or books chapters or article web pages, thesis, dissertations you have used, which is not yours. Please, I request you all the 47 people to please do the citations. किसी का भी काम कॉपी करके मत पेस्ट करो, because it is a very unethical thing. आप उनको प्रॉपर क्रेडिट्स दो. Now, in the last, I would like to say, good writing plus good research will make your article go from good to bad. Now, I will show you two articles. Tell me which one is better and why. And I request to the team, please provide the feedback form. And I request to the all the interns to please fill the feedback form so we will get to know how we can improve in our next sessions. Mr. Francis, now the feedback form cannot be provided as it is already closed. Thank you, Dhananjay, for your feedback. Just a second, the feedback form is providing by the team. Just a give second. Hmm. Everyone can see the presentation? I mean the article. Anyone have to turn on your mic because I cannot see the chat right now. Yes, we can see the article. Yes, sir. I will just make a zoom in so I think you can clearly see the article. Okay. Don't have to read anything, just read the article. Okay, this is not exact one which is published.
For example, Yes, this is sir. the article of 7 pages, okay? And the person has written in a very good manner, no doubt. He has written about the 39A and the appropriate procedure for it. Sir, your voice is blurring, sir. Now it is audible. Now it is the Yes, audible. yes, Okay. Yeah, yeah. Okay. She has written the procedure for ADR, Article 39, appropriate procedure. Then the differences between mediation, conciliation, and this is about legal aid. She has written the case laws also. Then she has written the conclusion. Now I will show another article. See here, she has written abstract, author details, keywords, introduction, objectives, mediation, arbitration. This paper basically relates to ADR. इन हेडिंग सब हेडिंग से आपको पता लग रहा है ना कि ये ADR से रिलेटेड है. कंसिलिएशन. आई बिलीव इसने 3 mechanism ऑफ ADR पे लिखा है. She has done of the 3 processes. Now she appropriate procedure. Comparison भी कर दिया इसने यहाँ पे. Now the difference भी लिख दिया है इसके बीच में. उसने लीगल एड के बारे में बता दिया है. Now she has written some case studies. In the last, she proceed with conclusion, and I think these are references. अब हमने दोनों आर्टिकल स्किम कर लिए. अब आप लोग मुझे बताओ कि इन दोनों आर्टिकल्स में से अच्छा कौन सा है. मधु पीपीटी बंद हो गई है, अभी हम आर्टिकल स्किम कर रहे हैं. दो. अब आप बताओ कि पहला आर्टिकल सही था या दूसरा आर्टिकल सही था. एंड व्हाई. Second one looks better formatted and clean too. Because that has headings and we can just skim it and find out what it is about. And at any particular point of time, we know what part of the article we are reading. Very good. Very good. Well done. Second one, anyone who believes the first article is best? Who believes? Please let me know. So most of you are saying second article better. Do you remember highlight of headings and subheadings? Right, exactly. So all of things were there in second article. So once in the presentation I used a word, scannability. When I was talk about showing my presentation, if you open a website, you have these two articles. Before you will obviously prefer the second article, because at an instant you can see whether this article is useful for you or not, because of the proper headings and subheadings that are given right, and also all points are given in the article. You need to understand a particular topic. So always remember, that is why we have given you a format. The format that we prescribed you for article writing is a very good standard, because that is what mostly is followed until and unless there is something else specified. So using the format is Times New Roman, font size 12, writing your references, highlight your headings and subheadings in a proper manner makes your article really good.
Now, does anyone have an idea of the citation style that you are supposed to use during your internship? If you have an idea, write yes or no, or also write about the which citation style you are using. जशन, ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग ब्लॉग आप ग्रुप में आपके ग्रुप कोऑर्डिनेटर प्रोवाइड कर देंगे। तो हम लोग ब्लू बुक यूज कर रहे हैं, ब्लू बुक 20th एडिशन। अब मैं आपको दिखाता हूँ ब्लू बुक। आई बिलीव ये ना सबसे इजी मेथड है। सीधा सर्च करो, हमारे ग्रुप कोऑर्डिनेटर आपको ग्रुप में प्रोवाइड करेंगे। आपको क्या करना है, डायरेक्ट गूगल पे जाना है। अगर आपको नहीं मिले तो ब्लू बुक 20th एडिशन, देन पहली वेबसाइट है एससीसी ऑनलाइन, उस पर क्लिक कर दो। प्रॉपरली विजिबल है। I believe this is comparatively easy because yeah, firstly we will use I think ILI, but it's we use Blue Book now. I will just share it with you. Definitely being provided by your group coordinator by tomorrow. If it is not provided, I will let you know. I will talk with the team. They will provide it in 1 to 2 days. So the Harvard Blue Book printed edition is basically a referencing style that we use while we're writing our papers and articles. And so one of you can see they have written a general rule of citation, which we have underlined here. If you can see that they have written the general rule, they also given some examples on how you must be citing them. Okay, the cases, mostly what we will while citing the cases, mostly we will be citing case laws and websites because it's an online internship. Then there are the statutes. I think very few of you will referring the books because as an online internship, not all the people are referring the books for that. The general rules are about the plaintiff, appellant, that the parties, two defendant, appellant. I will explain this whole book to all of you. First one is book. वॉल्यूम नंबर, अगर कोई वॉल्यूम नंबर है तो आपको लिखना है, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। देन उसके बाद ऑथर्स नेम, देन टाइटल ऑफ द बुक, पेज नंबर, पब्लिशर नेम, ईयर ऑफ पब्लिशिंग। टाइम खत्म होने वाला है, लेकिन हम 11 बजे तक इसको एक्सटेंड कर देंगे आज। केसेस, प्लेंटिफ का नाम पहले, गुरु नानक फाउंडेशन वर्सेस डिफेंडेंट का नाम बाद में, रतन सिंह एंड सन्स, देन उसका साइटेशन। प्लीज ये आप दिमाग में डाल लो इस ब्लू बुक को 1 महीने के लिए। 1 महीने इसी पे काम करना है और ये ध्यान रख लो कि इधर आए हैं तो इसको सीख के जाना है, बिकॉज ये बहुत ही इजी है। बट समटाइम्स पीपल, लोगों को ये हार्ड लगता है, बट बहुत इजी है। देन स्टैट्यूट्स हो गए, शॉर्ट टाइटल ऑफ द एक्ट, स्पेसिफिक शॉर्ट टाइटल हो गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, लाइक शॉर्ट टाइटल ऑफ द हो गया इंडियन पिनल कोड, स्पेसिफिक सेक्शन बीइंग रेफर टू सेक्शन 49, एक्ट नंबर हो गया 47 ऑफ 1860, एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट 1860, कंट्री एब्रिविएशन आईएनडी, आई इंडिया। सो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आप रेफर करते हो, फिर आर्टिकल्स कैसे रेफर करने हैं, पहले ऑथर का नाम, फिर टाइटल ऑफ द आर्टिकल, फिर कोई जर्नल में, अगर ये जर्नल वाले आर्टिकल की बात हो रही है, फिर जर्नल वॉल्यूम नाम डालना है, एब्रिविएशन है वो डालना है, स्टार्टिंग पेज ऑफ द आर्टिकल डालना है, फिर उसमें हमें पेज साइड करना है, फिर उसका ईयर लिखना है जर्नल का। ईश्वर्या, इसकी पीडीएफ आपको कल हमारे ग्रुप कोऑर्डिनेटर आपके ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। फिर ऑनलाइन सोर्स, जैसे आपको लीगल विद्या का आर्टिकल साइट कर रहे हो, नेम ऑफ द वेबसाइट लीगल विद्या, यूआरएल, उस आपको वेबसाइट का यूआरएल नहीं डालना है इसमें। इसमें आपको जो आर्टिकल आप कॉपी कर रहे हो, कुछ चीज ले रहे हो, वो चीज डालनी है। फिर जब डेट लास्ट विजिट करिए वो भी डालना है। नेम ऑफ द ऑथर, नेम ऑफ द आर्टिकल, नेम ऑफ द वेब पेज,
date of access, time of access, देन नेम ऑफ द, इफ कोई पीडीएफ से आप कोई पीडीएफ कभी कभी आपको मिल जाती है उधर से लेना है तो ये सब चीजें सब सब मिलेगा आपको इसमें। एंड ये आईबीआईडी, सुप्रा आईबीआईडी वो चीज होती है। फॉर एग्जांपल किसी आर्टिकल में आ जाता हूं मैं, ठीक है, आ जाओ, ये चीज मैं यहाँ पे समथिंग साइड कर रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोल ओल्ड प्लस एफ, फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग आईपीसी 1860, ये सही नहीं है, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ साइड कर दिया, मुझे इसी पेज पे वापस सेम चीज साइड करनी है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कंट्रोल आल्ट प्लस एफ, मैं यहाँ पे लिख दूंगा आईबीआईडी, मुझे वापस से ये सेम चीज साइड करनी है कहीं नीचे, मैं यहाँ क्या लिखूंगा, सुप्रा नोट 1, समझ आ गया सबको पूरी पीडीएफ? So now, if you have any queries, please may ask. I am open to answer all the queries. Also, my team has provided the feedback form to you all. I request to all of you, please fill the form. So next time से हम और उतना ready होके आएंगे. Anybody have no queries? मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ फीडबैक फॉर्म फिल करके जाएं। और एक एक सेकंड लीव मत करना, अगर क्वेरी से पहले मैं आपके साथ एक ग्रुप सेल्फी लेना चाहता हूँ। जस्ट क्वेरीज अभी हम लेते हैं, बस एक सेकंड रुक जाओ। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आज अपना कैमरा ऑन कर लो। आई नो टाइम इज वेरी लेट नाउ। I request to everyone, please give support something. Yeah. Can we get more people? Thank you, everyone. Now I am open to all your queries. Please may ask. Sir, could you explain the difference between IBID and supranote again? Okay, Mimansha. आपको एक्सप्लेन डॉक्यूमेंट में चाहिए या मैं अभी ऐसे बताऊं? ऐसे ही भी चलेगा। आप फर्स्ट पेज पे सेक्शन साइड कर रहे हो, सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट का। फर्स्ट पेज के फर्स्ट पैराग्राफ पे आपने साइड कर दिया सेक्शन 21। आपको फर्स्ट पेज के थर्ड पैराग्राफ पे वापस वही साइड करना है। मतलब साइटेशन नंबर 1 भी पब्लिक सर्वेंट था, सेम पेज। साइटेशन नंबर 2 भी पब्लिक सर्वेंट है, सेम पेज पे जब हो तब आपको लिखना है IBID। नाउ इफ यू आर साइटिंग सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट, किस पर? पेज नंबर 1 पे। उसके बाद आपको साइट करना है सेक्शन 21 पेज नंबर 4 पे। तो आप क्या लिखोगे? सुप्रा नोट 1। समझ गए? Yes, sir. Thank you. वेलकम। एनी अदर क्वेरी? I request to everyone, please fill the feedback form.
I request to the team, please provide the form again. And have any queries, please may ask. Any queries, or we will wind up the session? Oh, okay, I think there is no any queries. And now I will call, move ahead to Hitesh Prajapat to wind up the session. Thank you, everyone. I hope you will learn something today. And हम चाहते हैं कि आप इस इंटर्नशिप में कुछ नया सीख के जाएं. Okay, thank you, everyone. Good night. Happy learning. As we wrap up this session, How to Do Legal Research, I want to sincerely thank our esteemed speaker, Mr. Paras Chuk, sir, for sharing his valuable insights. Your guidance on research method, legal writing, and citations has been truly enlightening. A big thank you to all our participants for your enthusiasm and engagement. We hope this session has equipped you with useful tools to improve your legal research skills. Remember, strong research is essential for success in the legal field, and continuous learning is the key. Stay connected with Legal Vidya for more sessions, workshop, and learning opportunities. Keep exploring, keep questioning, and most importantly, keep learning. Thank you. Good night.